हाय एवरीवन। मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं एनक्लेक्स के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस पे। तो हम नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। The nurse is instructing a new breastfeeding mother in the need to provide her premature infant with an adequate source of iron in her diet. Which statement reflects a need for further education of the new mother? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स सही हो सकते हैं। आई विल यूज ओनली ब्रेस्ट मिल्क और एन आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला एज अ सोर्स ऑफ मिल्क फॉर माई बेबी until she is at least 12 years old. The breast milk or an iron fortified formula is recommended as the primary source of nutrition for the first year of life. तो इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। Coming to the second point, my baby will need to have iron supplements introduced when she is 4 months old. Premature infants have iron stores from the mother that last approximately 2 months. So it is important to introduce an iron supplement by 2 months of age. Okay. तो 4 months of age लिखा है तो ये गलत है. Thirdly, I will need to add iron supplements to my baby's diet when she is 2 months old. Premature infants जो है they have iron stores from their mother that last approximately 2 months, as I have already told in the previous point. So it is important to introduce an iron supplement by 2 months of age. Full term infants have iron stores that last approximately 4 to 6 months. So yes, we can consider this point. Last point, when my baby begins to eat solid foods, I should introduce iron fortified cereals to her diet. So, iron fortified cereals are a good source of iron once a child is old enough to consume solid foods. So, ये गलत है. ठीक है. Next question. A first time mother brings in her 5-day old baby for a well child visit. The nurse weighs the infant and reports a weight of 7 lb 5 O's to the mother. The mother looks concerned and tells the nurse that her baby weighed 7 lb 10 O's when she was discharged 4 days ago. The nurse's best response to the mother is, let's see the responses. I will let the doctor know and he will talk with you about possible causes of your infant's weight loss. Loss of a few ounces during the first few days of life ये बहुत ही normal है. And there will be a reason for concern अगर infant वो वही बर्थ के जो वेट है उस पे वापस नहीं जाते हैं विद इन 2 weeks ऑफ लाइफ. ठीक है, तब वो एक कारण बन सकता है चिंता का. तो ये नहीं जा रहा है. A weight loss of a few ounces is common among newborns, especially for breastfeeding mothers. Newborns can lose up to 10% of their birth weight without concern, of course, but should regain their birth weight by 2 weeks of age. तो ये सही है. Next, I can tell you, you are a first time mother. Don't worry, we will find out why she is losing weight. The nurse should not make this comment. ठीक है, नर्स को ऐसे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए. The mother will likely feel belittled and she may feel afraid to ask any questions in the further and in the future. So ये गलत है. Last, maybe she isn't getting enough milk. How often are you breastfeeding her? तो ये भी कमेंट नहीं करना है. A loss of a few ounces during the first few days of life is normal, and many times infants of breastfeeding mothers lose weight initially because the mother's milk has not come in yet. Okay, so yes, we are not going to consider this point. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Which toy is the best choice for a 12-month-old? कौन से टॉय बेस्ट चॉइस है 12 महीने के बच्चे के लिए? बेबी डॉल क्या सही है? द चाइल्ड कैन प्ले विद अ स्मॉल बेबी डॉल बट शी विल लाइकली जस्ट पुट द डॉल इन हर माउथ एंड शी इज नॉट ओल्ड इनफ टू प्ले अप्रोप्रिएटली विद दिस टॉय. तो ये गलत है. सेकेंड, म्यूजिक रैटल.
Music rattle is the perfect toy for this child. Infants have short attention spans and enjoy auditory and visual stimulation. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बोर्ड बुक. रीडिंग टू चिल्ड्रन इज essential throughout childhood क्योंकि तभी वो सीखेंगे. However, the child will likely just chew on the book क्योंकि तभी उनके दांत छोटे छोटे रहते हैं और उनका जो च्यूइंग का हैबिट है वो तब से ही चालू होता है. So it is not the ideal choice. Last, colorful beads. Beads are not appropriate toys for infants because of the risk of choking. कुछ भी चीज़ वो मुंह में डाल लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे बुक्स का ही एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो बीड्स तो और भी खतरनाक हो जाएगा उनके लिए. ठीक है, तो ये भी गलत चॉइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The parents of a newborn are asking the nurse how to use the infant car seat and where it should be placed in their vehicle. Which is the most appropriate action by the nurse? Okay, चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं. Give the parents a pamphlet explaining how to install the car seat. पैम्पलेट्स यूजफुल टूल है जिससे आप सिखा सकते हैं पेरेंट्स को, लेकिन एक हैंड्स ऑन अप्रोच इज द बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो ये गलत है. Second, accompany the parents to the car and show them how to install the car seat. Nurse accompany कर सकते हैं parents को अगर if she is proficient, like if she knows in all about the car seat safety and installation processes, तो ये कर सकते हैं. uh, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा सूटेबल एक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर नर्स को तो ये पता नहीं होगा. Okay, contact the hospital's car seat safety officer, and ask the officer to accompany the parents to the car for the car seat installation. ये सबसे ज़्यादा appropriate point है. जब मैं इतनी देर तक यही point सबसे अच्छा लगा. The car seat safety officer is the best choice, as that individual would have the needed information also and certification also to help the limits of like installing this car seat to the family, help the family. So yes, ये correct है. लास्ट क्या बोले हैं देख लेते हैं फिर भी. शो द पेरेंट्स अ वीडियो ऑन कार सीट इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी एंड आस्क इफ दे आर कंफर्टेबल विद द इंफॉर्मेशन. नहीं, अ वीडियो में बी यूजफुल टूल टू रीइंफोर्स टीचिंग, लेकिन हैंड्स ऑन अप्रोच फिर भी एक बेटर अप्रोच है, इज द बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. चलिए बढ़ते हैं towards the last question for today's video. The mother of a newborn asks the nurse when the infant will receive the first hepatitis B immunization. Which is the nurse's best response? Babies receive the hepatitis B vaccine only if their mother is hepatitis B positive. जो बेबीज बॉर्न होते हैं ना टू मदर्स हु आर पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस बी, दे रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विद इन 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी. तो ये उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं लगा. एनीवे, मूविंग टू द सेकेंड वन. द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विल बी गिवन प्रायर टू डिस्चार्ज टुडे. ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ये अप्रोप्रिएट आंसर या फिर रिस्पॉन्स हो सकता है नर्स के बिहाफ से. The first dose of the hepatitis B vaccine is recommended between birth and 2 months. तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में न्यूबॉर्न्स को ये वैक्सीन दिया जाता है डिस्चार्ज से पहले. Let's see the third point also. The first dose of hepatitis B vaccine is given at 1 year of age. बिल्कुल नहीं. First dose of hepatitis B vaccine जो है वो recommend किया जाता है between birth and 2 months. तो बहुत सारे hospitals में discharge से पहले ही ये vaccine दिया जाता है. Last, babies receive their first hepatitis B vaccine at 6 months of age. वही बात है, um, like since birth to 2 months of age ये वैक्सीन दिया जाता है, तो ये भी गलत है. तो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने हैं
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देन आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। स्टडी मटेरियल्स वुड बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, मॉक लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व, ये सभी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सभी डिटेल्स मिल जाएगा। डू कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड पोस्ट डाउन योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।